जिन लोगों ने घर के लिए कर्ज लिया है उनकी ईएमआई कुछ कम हो सकती है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती का फैसला किया है। मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद रिजर्व बैंक ने रेपो रेट घटाने का ऐलान किया है और अब रेपो रेट में 0.25% की कटौती का ये ऐलान हुआ है। इसके साथ ही अब रेपो रेट घटकर 6% पर आ गया है, जो पिछले 6.5 साल का सबसे कम है, न्यूनतम स्तर है। वहीं रिवर्स रेपो रेट भी घटकर अब 5.75% पर आ गई है। इससे लोन की जो ईएमआई है उस पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि ये बैंकों पर निर्भर करता है कि वो इसका कब तक और कितना लाभ ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, लेकिन पिछले 4 बार से समीक्षा के बाद रेट में कटौती नहीं की गई थी और इस बार महंगाई दर के नीचे रहने पर इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही थी कि रेपो रेट में रिजर्व बैंक कटौती करेगा और वो जो उम्मीद है एक तरह से वो पूरी हुई है। 0.25% की कटौती का ऐलान हुआ है, जिसके साथ ही रेपो रेट घटकर अब 6% तक आ चुकी है। आपको बता दें कि रेपो रेट क्या होती है, तो जिस दर पर रिजर्व बैंक सभी बैंकों को कर्ज देता है उसे ही रेपो रेट कहा जाता है और रेपो रेट घटने का मतलब है बैंकों के पास ज्यादा पैसा होना, बैंक ही बाजार को ज्यादा कर्ज दे सकते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है आरबीआई की, एक बार सुन लेते हैं। We have seen SBI has cut the savings bank rate, so clearly they are indicating that the margins are under pressure. So with this rate cut, do you expect really banks to transmit bank to follow you by cutting lending rates further? The way to look at the transmission is to determine what has been the case since we started the easing cycle. There are 2 or 3 things that are clear. One, that on new lending, the transmission has been much stronger, especially in those segments where there is a lot of competition. So, housing loans and personal loans, where the NBFCs also play a big part. Secondly, on the part of the loan portfolio that is tied up on account of base rate and liabilities of a longer nature, the transmission has been slower. Given the liquidity conditions prevailing and that we have reduced policy rates by a substantial amount since the easing cycle started, I think there is scope for banks to reduce lending for those segments that so far they have not yet benefited to the full extent of our policy rate cuts. Cogensis. Thank you, sir. Bijoy from Cogensis here. Sir, this is effectively a 5-1 vote in favor of easing. It's not a 4-2. There is a lack of sync between the RBI members voting itself. From February, when there was a stance change to eventually having to cut your CPI inflation projections, and having a 5-1 vote in favor of a status quo last time. This is the 5-1 vote in favor of an easing. It's a sharp movement in the last 6 months. Do you think it shows that there is certain amount of dissonance and there are too many factors that are moving, which means that different people have different views even within the RBI? Well, firstly, there is a reason why we put out the minutes, so that the individual members can give their specific reasons for their vote decision, and possibly to explain why they changed their minds from June. I think the resolution itself, on balance, very comfortably shows why we went for a 25 basis point cut compared to the status quo in June. We have had more data points, some uncertainty has been resolved,